LG माइक्रोवेव ओवन ये आया है हमारे पास। प्रॉब्लम इस नॉइस चेक करेंगे हम, किसमें नॉइज़ है और किस तरह से। इसका मॉडल नंबर MS2342AE। हम चालू करके चेक करेंगे इसको। अभी हम चालू करने वाले हैं। इसमें हम कपड़े डालेंगे इसमें गर्म होने के लिए, चेक करने के लिए। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 30 सेकेंड। आवाज़ आ रहा है मोटर में। इसका मोटर और डिस्प्ले कट आ रहा है। आधा डिस्प्ले कट आ रहा है इसमें। अभी हम खोल के चेक करेंगे। ये मोटर का आवाज़ है, चेक करके दिखाते हैं आपस से। ये वाला मोटर का आवाज़ है। ये हम चेक करते हैं। देख सकते हैं इस मोटर का आवाज़ है। इसको भी हम ग्रीसिंग करने वाले हैं खोल के, तो आवाज़ बंद हो जाएगा। ये खोलना है पीछे का स्क्रू। ये भी खोलना है इसको, 2 स्क्रू। मोटर खोलने के लिए सारे चीज़ों को खोलना पड़ता है। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसको ग्रीसिंग करने के बाद वॉशर आवाज़ नहीं आएगा।
अभी ग्रीसिंग करेंगे, इसको खोलना है। खोलते वक्त ध्यान देना है मोटर का, उल्टा से उल्टा तो रोटेशन उसका उल्टा घूमेगा। इस तरह से ग्रीसिंग करना है इसको, तो आवाज़ नहीं आएगा। जो सुन रहे हो आवाज़, इस तरह से इसको ग्रीसिंग करके फिट करके वापस लगाना है, तो जो आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ नहीं आएगा। इस तरह से इसको टाइट करना है। वायरिंग जैसे खुला था वैसे ही फिट करना है पे से, उसके बाद सबसे फिट करना है। बोल, आया रुक, हाँ 1 मिनट आया। इस तरह से इसको टाइट करना है। अभी हम टाइट करके चालू करके दिखाएंगे आपको। अभी आवाज़ नहीं आएगा, टाइट हो चुका है। अभी हम चालू करने वाले हैं, कपड़े डाले इसमें, अभी आवाज़ नहीं आएगा। सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आवाज़ आता है मोटर में तो आप भी ग्रीसिंग कर सकते हैं। आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुका है, देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू देखने के लिए।